ऐसे जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या जमिया नहीं, जिन्हें लाहौर से राज कीता वो मरिया नहीं। सर मेरे कुछ हिंदू फ्रेंड्स हैं, दे कीप टेलिंग मी जी के राजा साहब जो थे वो हिंदू थे बिकॉज उन्होंने गौ रक्षा की। ही वॉज वेरी क्लोजली अलाइन टू सम टेम्पल्स, काफ़ी सोना भिजवाया था, और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी वफात के बाद जो है कोहिनूर वो एक मंदिर हो गया। तो जैसे कैदू कहते हैं ना हीरांजम में कि मैं बंदियां नू चाड़ देना, महाराजा रंजीत सिंह में थी कि हर बंदे का उनको वैल्यू भी पता थी और वज़न भी पता था। ध्यान सिंह ने कहा कि जी इनकी लंबी उम्र हो, और अजीज़ुद्दीन ने कहा नहीं मैंने मौत देखी है तो मुझे पता है कि इनका वक्त आ गया है। फ़कीर नूरुद्दीन साहब ने तारीख़ कोहिनूर लिखी, वहाँ उसमें ज़िक्र करते हैं कि रंजीत सिंह ने इतना दबाया कि शाहशुदा फिर हार मान गया और उसने कहा जी कोहिनूर ले जाओ। इसकी कीमत क्या है कोहिनूर की? तो उन्होंने कहा अगर आप एक पत्थर फेंकें जनूब को, एक शुमाल को, एक मगरब को और एक मशरिक़ को, और आसमान तक पांचवा पत्थर फेंकें, तो उस पूरी जगह में अगर आप सोना भर दें तो फिर भी कोहिनूर की कीमत से कम है। तो फिर किसी ने कहा कि ऐसे करें आप इंडिया और पाकिस्तान में जैसे बाकी चीज़ें बटी हैं तो ये भी आप बांट लें, जहेज़ के तौर पे ये दे दें, ये दे दें। ठीक है। कोहिनूर जब दिखाया जाता था और नुमाइश के तौर पर महाराजा रणजीत सिंह ने मंगवाया, ज़ाहिर है फरंगी जो आते थे वो कहते थे जी हमने कोहिनूर देखना है वगैरह। रस्सी थी वो ऐसे अंदर रख के और मुट्ठी में पकड़ लेता था, सो दैट नोबडी कुड रिमूव इट फ्रॉम हिज हैंड। साहब देखने की हाथ नहीं लगा। निज़ाम साहब, निज़ाम हैदराबाद जो थे उनको में एक बहुत कमीने थे जो आखिर में इन्हां 2 सालों विच, हालांकि ये अंग्रेज़ी नहीं बोल सकती सी ते महाराजा दुलीप सिंह पंजाबी नहीं बोल सकता सी, इन्हां 2 सालों विच वो ऐसे हावी हुई पुत्र ते कि जो भी अंग्रेज़ां ने 12 साल विच कोशिश की इन्हू अंग्रेज़ बनाने दी, उन्हें इन्हू पंजाबी बना दिता 2 सालों विच। कि फ़कीर मुखलिसुद्दीन और ये ਅਸੀਂ छोटे होंदे सां ते उन्हां ने की करना, सर्दियां दे दिन एक बगल विच मैं ते एक बगल विच मुखीस ते सानू ओ चोगा ओढ़ के ते फिर कहानियां सुनाते सन। महाराजा रंजीत सिंह साहब मेरी नज़र में पंजाब का आखिरी सच्चा रवादार हुक्मरान। Would it be okay to call him the last pluralistic ruler for Punjab? Yes, it would, because he deserved the title. उनकी ज़िंदगी का मकसद मैं यही कहूँगा राज करने का नहीं था, राइट। वो था कि पंजाब को अहमियत दें और पंजाब को भी वो एक इन अ सेंस यूनिक मकाम बनाए तारीख़ में। सो एंड इट वाज अ कॉन्शियस थिंग बाय हिम, ये कोई गफलत से में नहीं हुआ, एक ख़ास उनकी पॉलिसी उन्होंने बड़े तवज्जो नाल कीता सी। सो ठीक जी। सर ने पॉलिसी का जिक्र किया, वाज इट अ पॉलिसी ऑफ हिम टू एम्प्लॉय हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस? उनके दरबार में ये सब लोग थे। मजबूरी थी, पॉलिसी कम थी, मजबूरी थी। मैं ये कहूँगा सर कि ये जो आपने अभी मैंने नक्शा डिस्क्राइब किया साउंड्स मोर लाइक द कैनेडियन पार्लियामेंट। क्या वो भी मजबूरी है या दे वर रियली प्लूरलिस्टिक, या आई मीन व्हाट, हाउ डू यू सी दिस? वेल उसमें ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा फ़र्क है ना। ਕੀ फर्क है? लेट्स से द कैनेडियन पार्लियामेंट, इट्स एन इलेक्टेड बॉडी, वहाँ आप इंतखाबात होते हैं, लोग आते हैं और वो मेजॉरिटी से उनको जब जीतते हैं फिर पार्लियामेंट में चले जाते हैं। यहाँ वो बात नहीं थी। ये थी कि महाराजा रणजीत सिंह जिन्हों पसंद करते सन, जिन्हों इस्तेमाल करना सी उन्होंने ले आते सन। ते समझो कि डोगरा जिहड़े सन वो कॉल कैनेडीज थे अबाउट जॉनसन, जिन्होंने पूछा गया कि तुसी इहनू वाइस प्रेजिडेंट क्यों बनाया, तो ही यूज्ड एन एक्सप्रेशन that I'd rather that he was doing whatever he was from inside the tent, not from outside the tent. So hold your friends close and hold your enemies closer. Well, in a sense, yes. In a sense. And for some of them, जैसे गुलाब डोगरा भाई थे तीनों, वो उनको पता था महाराजा रणजीत सिंह को कि ये इनको मौका मिले तो मुझे हटा देंगे, मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। He was aware कि हो रहा है। He knew what they तो और जब आप बात करते हैं रूलर का, प्लूरलिस्टिक का, असल शनाख्त उस
बंदे की होती है, उस राजा की होती है या सरबराह की होती है जो कि बंदे को पहचान ले। तो जैसे कैदू कहते हैं ना हीर रांझा में कि मैं बंदियां नू चाड़ देना, मैं आदमी को की शनाख्त कर लेता हूँ। जी, वो इकबाल ने भी कहा था, मर्द मुजाहिद तुझे पहचान गए हम। बस सो ये बात है इनमें। महाराजा रंजीत सिंह में थी कि हर बंदे का उनको वैल्यू भी पता थी और वज़न भी पता था। और सो उस लिहाज से जब मैं कहता हूँ कि मजबूरी थी, उनके पास थे मुसलमान, हिंदू थे, रियासत में थे, और मगर उनमें एक खूबी ये थी कि उन्होंने सही बंदे को सही जगह में रखा। राइट। और ये भी नहीं कि उन्होंने एक दूसरे का तोड़ बनाया, ये भी नहीं था कि दे वर्क टुगेदर। तो जब उनका इंतकाल हो रहा था, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, इंतकाल हो रहा था तो गुलाब महाराजा ध्यान सिंह, उनके वज़ीर जो थे, वज़ीर आला, वो उनको अटेंड कर रहे थे। भाई गुरमुख सिंह थे वहाँ, भाई राम सिंह उनके जो सिख अटेंडेंट थे, और फ़कीर अजीजुद्दीन। और उन्होंने फिर कहा कि ध्यान सिंह ने कहा कि जी इनकी लंबी उम्र हो, और अजीजुद्दीन ने कहा नहीं, मैंने मौत देखी है तो मुझे पता है कि इनका वक्त आ गया है। तो मेरे कहने का मकसद कि यहाँ जो था, इन्होंने उसी मौके पर भी लड़ सकते थे, बट दे डिडंट। उन्होंने आपस में जो भी इत्तेफाक है, क्योंकि ही वाज द बाइंडिंग फोर्स, ही वाज द बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर देम। सर, अगर आजकल के पाकिस्तान की नज़र को देखा जाए तो कहा जाएगा कि he was very soft on minorities. Is that true? Well, let me put it, was he soft on minorities? Let me put it this way, he didn't pursue minorities. Oh, that's enough, जी। अगर जुल्म ना करे minorities तरीके की, वो भी काफ़ी है यार। बस। सर, मेरे कुछ हिंदू फ्रेंड्स हैं, they keep telling me जी कि राजा साहब जो थे वो हिंदू थे, because उन्होंने गौ रक्षा की। He was very closely aligned to some temples, काफ़ी सोना भिजवाया था, और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी वफ़ात के बाद जो है कोहिनूर, वो एक मंदिर को दिया जाए। जगन्नाथ। तो जगन्नाथपुरी। does that not show that he was more leaning towards the Hindus rather than the Muslims? Well, it wasn't a choice of either Muslims or Hindus, because I think we tend to take a sectarian view of it. जी बिल्कुल, वो एक बड़ा binary view लेते हैं हम हिस्ट्री का। It's not, it doesn't, I wouldn't subscribe to that. If you understand Sikhism, then you would know that Sikhism evolved as not as a counterpoint to the worst in Hinduism and the weaknesses of Islam. And he preferred in his practical life to borrow from each what was the best in each. Right. And the egalitarianism that you see in Islam, he saw that. He saw the same thing in the Hindus, and he saw that and don't forget, many of his wives were Hindu, okay? So he had to accommodate that, rather like Akbar. Right. Akbar didn't hold it against Jodhabai. Right. Okay. She was a Hindu, she was a Rajput, but he didn't hold it against her. And so Jahangir grew up in a very egalitarian, pluralistic atmosphere. His mother was a Hindu, but one doesn't know him as that. You don't know him as a hybrid or as a, right. You see him as a person who had the benefit of both religions. And he was very politically astute doing it. So the same thing happened with Maharaja Ranjit Singh. One has to remember that many of the practices of the Sikhs were derived from Hinduism. And particularly when it came to, for example, the langar. और जब लंगर देंदे सन के वो हर जो भी गए वो आके बैठ जाए एंड उधर खाए, free for all. And then जब उन्हों दा इंतकाल हुंदा सी ते ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਰਪਾਈ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ cremation ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ. So all of those were Hindu rites, as it were, which they adopted, right, because there was no alternative as such. They didn't bury them as such. तो यही वो मशहूर कहानी है ये गुरु नानक जी दी कि जब इंतकाल होया तो हिंदू तो मुस्लिम लड़ना शुरू की थे कि जी इन्हों दफनाइए या शमशान ते ले जाइए, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਕਰੋ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਚਾਦਰ ਰੱਖੀ ਤੇ ਜਦ ਚੁੱਕੀ ਤੇ he was missing. So the point I'm making is that really it didn't matter. This is something that we have evolved
now. Right. Not, it wasn't there at the time. Right. Sir, अभी आपने जिक्र किया कोहिनूर का. सर मैंने जिक्र किया था कोहिनूर का जी. मगर सवाल आपसे पूछना पड़ेगा. The topic would be the gold, the throne, and of course the Kohinoor. And sir, probably the key word that must be realized when you talk about Kohinoor is Shahi loot. Because जी अगर आप history तो लुट के इधर-उधर गया है. What's your take on the story on these stolen gems? के who owns them now? Whoever possesses them. Possession is 9/10 of the law. So what about the moral ownership? I mean, how do you see that? There was a famous story, I'll say it in English, it was a famous story of Mae West, the actress. And she came into a party, a Hollywood party, dressed in diamonds. Right. And a young actress went up to her and gushed and said, my goodness, Mae, what diamonds? My goodness. To which Mae West replied, goodness had nothing to do with them. So in this case, morality has nothing to do with this. Right. These were the spoils of war. Whether it was Nadir Shah, whether it was before him, with the Mughals, whoever, these were the spoils of war. And so ownership came after possession. And that's why the Kohinoor today is now in the Tower of London and is, in fact, part of the crown jewels. There's a lot of argument about the legal ownership of the Kohinoor. Okay. What one has to recognize is that the Kohinoor, it was acquired by Maharaja Ranjit Singh under questionable circumstances. Yes, Shah Shuja se unhone liya aur kaun sa Kohinoor? What diamond? Well, he put a lot of pressure on Shah Shuja, who was at that time his guest. जी, बिल्कुल. And it was considered reprehensible in a way that you should be exacting something from your guest. Okay. So what is the cultural? I've heard some different stories about it. Like Sindh में था, तो I was told कि भी किसी चीज़ ज़्यादा तारीफ मत करना, because they will assume that you want this. That's why you were praising it so much, and they'll take it off and give it to you. यार ये ले जाओ अपने साथ. Oh no, it's a fact. So what's the cultural? Tradition. It's a tradition. Okay. मुझे याद है जब मैं सिंध में था, वहाँ एक टेक्सटाइल मिल चला रहा था, तो एक वो डेरा आया, और उसके बाद बहुत खूबसूरत Churchill guns थी, बंदूकें थी, a pair, and they were beautifully embossed, etc. And they were really a showpiece. So उनके दादे परदादे से उनको मिली होंगी, दादे से certainly. तो मैंने गलती की कि मैंने कहा कि जी आप बहुत ही खूबसूरत है ये. तो he said, साईं ये आपके हैं. तो मैंने कहा, no you can't. And he said, नहीं आपने पसंद किया, बस आप ही के हो गए. And he left. Oh dear. And he left the guns with me. And I said, no way. So that I ran out and handed it back to him. And I said, you can't do this. Now, that is taking it to its extreme. So what you just said, in this case, it wasn't a question of him admiring the Kohinoor and Shah Shuja generously handing it over to him. It wasn't like that. What happened was that Ranjit Singh coveted beautiful jewelry. He had emeralds, diamonds, rubies, etc. अगर आप उनकी paintings देखें तो we'll come to that. Of course. But उन्होंने फिर ये किया कि दबाया इनको, शाह शुजा को, धमकियाँ दी, जैसे ट्रम्प आजकल कर रहे हैं, धमकियाँ दी कि जी अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा आपको, आपके ख़ानदान को हो जाएगा, घर वालों को हो जाएगा वगैरह. It was unfair, but he was after it. ये जो कहानी थी कि उन्होंने अपनी पगड़ी में रखा और छुपाया, पगड़ी बदल भाई बन जाएंगे. नहीं वो भाई बन, absolute myth. Oh dear, oh dear. क्योंकि हमारे बुजुर्ग जो थे फ़कीर नूरुद्दीन साहब ने इस पर एक ख़त था मज़मून के शक्ल में, और ये जो उस वक्त डीसी थे, और ये मैं बात कर रहा हूँ 1851 की, आफ्टर द एनेक्सेशन, तो उन्होंने डीसी ने मैन कॉल्ड मैग्रेगर, उन्होंने फिर उनको कहा कि आप वहाँ थे, आप ये चश्मदीदा वाक़या आपने देखा सारा कुछ, आप वफ़ा बेगम को जानते थे, उनकी जो बीवी थी शाहशुदा की, तो उनको मुझे बताइए हुआ क्या, तो इसकी तारीख़ लिख लीजिएगा. तो फिर फ़कीर नूरुद्दीन साहब ने तारीख़ कोहिनूर लिखी, जिसके अंदर पूरा तबसरा दिया, और कोई 15-18 सफ़ों का है फ़ारसी में, और ये पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में था, पता नहीं आज है या नहीं, मगर मैंने उसकी फ़ोटो कॉपी करवा के और रखी थी. तो बाखर साहब ने फिर उसको शाया किया था, लेकिन वो इट वाज इनकरेक्ट, बिकॉज उन्होंने जो जिनसे भी लिखवाया उसने सही तर्जुमा नहीं किया. So it was rather dangerous. Because I had the original, I could then correct the original. Now,
वहाँ उसमें जिक्र करते हैं कि रंजीत सिंह ने इतना दबाया कि शाह शुजा फिर हार मान गया और उसने कहा जी कोहिनूर ले जाओ, दे दिया उनको। मगर उसके हमें कुछ मांगा भी था उसने। नहीं, क्योंकि वो रहाई मांगी थी। असिस्टेंस मांगी थी जी कि मुझे वापस well, बिठाओ। no, रहाई मांगी थी. He just wanted to be out. Okay. Right, because Ranjit Singh was not going to take him and restore him to the throne of जी Kabul. बिकॉज़ क्लेम तो ये था जी कि मैं गरीब आदमी, मुझे नाजायज तौर पे हटा दिया गया, आओ मेरी हेल्प करो। Well, Ranjit Singh knew better than to invade Afghanistan. Of course. The British foolishly did. जी जी। But the Ranjit Singh wasn't prepared to. जी। तो then फ़कीर नूरुद्दीन साहब अपने बयान में कहते हैं कि जब मैंने पूछा कि वफा बेगम साहिबा से कि इसकी कीमत क्या है कोहिनूर की, तो उन्होंने कहा अगर आप एक पत्थर फेंकें जनूब को, एक शुमाल को, एक मगरब को और एक मशरिक़ को, और आसमान तक पांचवा पत्थर फेंकें तो उस पूरी जगह में अगर आप सोना भर दें तो फिर भी कोहिनूर की कीमत से कम है। वाह। So that was her analogy of how priceless the gem was. तो जब 1849 की जंग हुई है तो one of the articles of surrender, it wasn't a treaty, it was an article of surrender, was that the young, at that time 11-year-old Duleep Singh would surrender the Kohinoor to Queen Victoria. Of course, of course. फिर on the 250th anniversary of the East India Company, जो उनका चेयरमैन था, उसने जाकर क्वीन विक्टोरिया को ये दिया। उस वक्त ये रॉ कट था। ओके, तो जब उनको नुमाइश में डाला, 1851 की जो नुमाइश थी उसको उसमें डिस्प्ले किया, तो उन्होंने कहा कि जी पब्लिक ने कहा ये क्या है, ये तो पत्थर ही है, इसके अंदर से कोई चमक ही नहीं है। They were used to cut diamonds. Right. So then Prince Albert, with the permission of the British government, had it cut and reduced from 186 carats to 106, which it is now. Right. तो मैंने जब डालरम्पल ने इसके ऊपर किताब लिखी तो मैंने उनसे पूछा कि जो बाकी 80 कैरेट्स थे वो कहाँ गए? भाई ओरिजिनल 106 का था। Right. और 186 का था। हाँ जी, तो 80 कैरेट्स किधर गए? 80 कैरेट कहाँ गया? तो कोई छोटी चीज़ नहीं थी। तो he said, I don't know, हमने कभी पूछा नहीं है। I said, that was equally the Kohinoor. When you think about it, वो भी कोहिनूर था। 40% of the mass. आज है। So उन्होंने फिर जब क्वीन विक्टोरिया को दिया गया, तो later in 1854 जब विंटर हाल्टर तस्वीर बना रहा था महाराज दुलीप सिंह की, तो क्वीन विक्टोरिया ने फिर अपने लेडी इन वेटिंग को कहा, इनफैक्ट इसके डॉक्टर लोगन को कहा कि अगर मैं कोहिनूर उसको दिखाऊं तो ये बुरा तो नहीं मनाएगा। सो फिर टारो लंदन से कोहिनूर मंगवाया गया और दिखाया गया इसको, और ये इस वक्त 18 साल का था। तो उसने फिर बड़े ड्रामाई अंदाज में कोहिनूर लेकर और मलका को कहा कि ये पहले तो मुझसे छीना गया था मगर अब मैं वॉलंटरली आपको बतौर तोहफा दे रहा हूँ, and handed it to Queen Victoria. So in that sense, you know, if the question is कि वो 11 साल की उम्र में उससे छीना गया था, तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि उसने 18 साल की उम्र में वापस कर दिया उनको. So that's the background to the Kohinoor as such. So अभी आपका ही आर्टिकल एक डॉन के अंदर very recently published हुआ है. इसमें से सर there's a line that I want to read for you and take your feedback on this. आर्टिकल का टाइटल है जी Crowns and Chips. And आपने कहा जी, in theory, India, Pakistan, Bangladesh, even Iran and Afghanistan could each claim ownership of the whole diamond or a share of it. Perhaps it is best kept intact where it is, the Tower of London. तो सर हमें तो सिखाया गया था जी कि we should develop anti-colonial mindset और ये जो लूटी हुई दौलत है सारी वापस करनी चाहिए, हमारे मैप्स हमें वापस करें, बुक्स वापस करें. Why do you take a different opinion? Why should it stay there? क्यों? क्योंकि इसका एक मकसद, एक वजह मेरी नज़र में एक वजह ये ज़रा याद करो कि 1911 में एक दरबार हुआ था, पहला दरबार था जिसके अंदर एक वलायती बादशाह आया था फिजिकली, क्योंकि बाकी जो दरबार थे वाइसरॉय कुर्सी को दरबार थे जी वो. हाँ जी. सो 1911 के दरबार के लिए उन्होंने कहा कि जी ज़रा
क्वीन मैरी ने अपना एक डायडम वगैरह पहना हुआ था और कोऑर्डिनेशन लिबास, उन्होंने भी, जॉर्ज पंजम ने भी अपना रोब वगैरह। अब बात आई कि ताज कौन सा इस्तेमाल करें, क्योंकि वो दिखाना चाह रहे थे सारे जो नवाब और रईस थे कि बादशाह है, and he was now the Emperor of India. So they couldn't take any of the crown jewels out of the country. So they had to make another crown. And that crown was made out of the revenues of the government of India. Oh dear God. अच्छा, तो वो जो भी जब बन गया और उन्होंने इस्तेमाल किया, वो फिर वापस वो दिल्ली में नहीं रहा, वो वापस वलायत चला गया और क्राउन ज्वेल्स में डाल दिया गया। ठीक है। जब 47 का में बंटवारा हुआ तो लोग उनके बेटे के पास गए, जॉर्ज VI इस वक्त वो थे, और कहा कि जी उसके साथ करें क्या, क्योंकि ये हमारी मलकियत नहीं है, ये तो इंडिया है किया। राइट। तो फिर किसी ने कहा कि ऐसे करें, आप इंडिया और पाकिस्तान में जैसे बाकी चीज़ें बंटी हैं तो ये भी आप बांट लें, जहेज के तौर पे ये दे दें, ये दे दें। ठीक है। अच्छा, फिर किसको दें? या तो उसको डिसमेंटल करें और उसके पत्थर जो हैं वो बेचें और फिर नीलामी करें वगैरह वगैरह, जैसे उन्होंने 1847 में किया था। 1857 में जब उन्होंने मुग़ल के जो भी क्राउन ज्वेल्स थे तोशा खाना वो फ़रोख्त कर दिया था, नीलाम कर दिए थे। सो उन्होंने कहा कि या तो ये करें तो या इसको महफूज रखें यहाँ। तो फिर ये फैसला हुआ कि इसको ऐसे ही रहने दें, और जब ये दोनों ममालिक जो है मुश्तरका तौर पर हमारे पास आएंगे और कहेंगे जी अब ये हमने फैसला कर लिया है, तो अब उसको अगर आप एक्सटेंड करें 1971 के बाद, तो व्हाट वाज पेड अप फॉर आउट ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया ऑफ प्री 1947 इंडिया, राइट, शुड नाउ डिवॉल्व ऑन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, राइट। अब मैंने इसमें ईरान का भी क्यों जिक्र किया है और अफगानिस्तान का, क्योंकि वो भी कह सकते हैं कि जी वो तो यहाँ से हिंदुस्तान से हमारे पास आए थे, फिर यहाँ से ईरान चले गए, और ईरान कह सकते हैं कि जी हमारे पास भी था। सो एट द मोमेंट वो ताज और कोहिनूर, लेस तो कोहिनूर, क्योंकि मैंने आपको सुना दिया कि उसकी तारीख क्या थी, लेकिन जो ताज था वो आज तक वहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों ममालिक में फैसला नहीं हो सकता है कि ये तुम्हारा कितना हिस्सा और मेरा कितना हिस्सा। अंग्रेज जो है कोहिनूर पे लेके चले गए, हालांकि उनके पास पहले से ही एनलाइटमेंट थी। So what would you pick, कोहिनूर और एनलाइटमेंट? The Kohinoor can only be worn by one person. Enlightenment is a public asset. Fantastic. Okay, so I don't think if it was a choice, I'd say let the Kohinoor be where it is. It doesn't matter who has it as long as people can see it. Right, which they can do to advantage there. So I would think that Enlightenment. Empire on canvas. अगर ऑगस्ट से कोई बेहतर आदमी है तो really let us know कि जी what the Darbar look like. ये मुझे बताइए सर, how was he able to capture the intricacies of the Darbar better than our history books? इसकी वजह थी उस ज़माने में, और मैं बात कर रहा हूँ अब 1850 की, रफली दैट पीरियड, ये एक रिवाज था कि ये जो वलायती मुसव्विर थे, यूरोपियन मुसव्विर भी, वो हिंदुस्तान आए और इसी मकसद के लिए आए कि हमें पैसा बनाएंगे यहाँ। राइट। अच्छा, उसके लिए उनको इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स कमीशन होती थी, वो बनाते थे और छोड़ जाते थे। राइट। वो स्विफ्ट हर किसी को ये उसको हर किसी इतना खुश नसीब नहीं था कि वो मुसव्विर जो है तस्वीर बना के बेच दे और उसको पूरी रकम मिल जाए। स्विफ्ट को इनफैक्ट गवर्नर जनरल के पास जाना पड़ा कलकत्ता में कि जी ये नवाब जो है और उसने पैसे तस्वीर बनाई है और पैसे नहीं दे रहा। So they were bad debtors. They were bad debtors. Oh dear. Because their appetite exceeded their revenues, their assets. So इसमें स्विफ्ट जब आया पंजाब तो उसको कहा गया कि जी वहाँ बड़ी दौलत है सिख पंजाब में, तो आप वहाँ जाएं। तो यहाँ आ गया लाहौर, और जब यहाँ पहुँचा तो महाराजा शेर सिंह थे उस ज़माने में, वो तख्त पर थे, तो उन्होंने फिर इनको बड़ी सपोर्ट दी, और इनफैक्ट सो मच सो कि वो जब लाहौर पहुँचा तो फिर इनको कहा कि तुम अमृतसर आओ, क्योंकि शेर सिंह वही मुकीम थे।
और शाम का वक्त था, तो उसने कहा कि मेरी तस्वीर बनाओ। उसने कहा इतनी रोशनी नहीं है, तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसे करो, इस भाई गुरमुख सिंह है यहाँ, उसकी तस्वीर बनाओ। तो उन्होंने बनाई, एंड ही वाज वेरी अडेप्ट एट क्विक स्केचेस। उन्होंने बना दी, बड़े खुश हुए सारे दरबार ने, और जी देखो। सो दूसरे दिन फिर शेर सिंह साहब ने अपनी तस्वीर, महाराजा शेर सिंह ने अपनी तस्वीर बनाई, और बाकी मुख्तलिफ जो दरबारी थे उनकी भी तस्वीरें ऐसे बनी। और कईयों ने कहा कि मुझे इस लिबास में बनाया, किसी ने कुछ। जब उसने ये सारी बना दी, और चंद ऐसी तस्वीरें थी जो कि उन्होंने बना के और फिर छोड़ दी तोशाखाना में, शेर सिंह के तोशाखाना में। जब वापस गए, उन्होंने सिर्फ 8 महीने लाहौर में काटे। बीवी उनकी फिरोजपुर में थी, क्योंकि ही डिडंट ट्रस्ट ब्रिंगिंग हर अक्रॉस द बॉर्डर, सो वो वहाँ थी। तो वापस गया, वहाँ से फिर आगे गया, और फिर मुंबई के ज़रिए बलैत चला गया। वहाँ जब पहुँचा तो उसने शेर सिंह मर चुका था, और दुलीप सिंह आ गया था, फिर जंग हो गई थी, तो गुलाब सिंह आ गए थे, उन्होंने कश्मीर ख़रीद लिया। तो सडनली द पैटर्न ऑफ सिख पॉलिटिक्स एंड पंजाब पॉलिटिक्स हैड चेंज्ड। तो उन्होंने कहा चलो इसमें मैं फ़ायदा उठाऊँ। तो उन्होंने ये ऐसी एक तस्वीर बनाई जिसमें जो भी उन्होंने स्केचेस किए थे पंजाब में, उनको उन्होंने इसमें शामिल किया, राइट। और वहाँ जैसे मैंने अर्ज़ किया, एक रिवाज था कि सिर्फ एक पोर्ट्रेट नहीं, मगर उनका एक कोलाज बनता था, पैनोरामा बनता था, जिसके अंदर तमाम जो थे लोग दरबार के, उनको शामिल किया। और बहुत ही, जैसे जब उन्होंने तस्वीर मुकम्मल की 1854 में, तो प्रिंस एल्बर्ट आए देखने के लिए पिकाडिली में, और इसने फिर मैनचेस्टर में नुमाइश की, वियना में की 1855 में, वियना में की। सो वियना में जब कैटलॉग उसका बना नुमाइश का, तो उसके अंदर उसने फिर समझाया कि फ़लाने की नंबरिंग की, नंबर 11 ये है, नंबर 12 वो है, नंबर 15। जब मैंने अपनी दूसरी किताब शाया की थी, सिख पोर्ट्रेट्स बाय यूरोपियन आर्टिस्ट, इसी तस्वीर पर, तो मुझे ख्याल आया कि यार ये एक्सीडेंटली इसने लोगों को यहाँ नहीं रखा, कोई मकसद होगा इसका। और द की वॉज कि जब उसने राजा देहान सिंह को, जो वज़ीर आज़म था, और अजीत सिंह सिंधावालिया को पीठ पर पीठ खड़ा किया हुआ था तस्वीर में, इन द सेंटर, तो उसका मकसद था कि ये जानी दुश्मन है। So they can't face each other. They can't face each other. और जब अजीत सिंह सिंधावालिया को मैंने देखा कि ये शेर सिंह को देख रहा है, तो इसका मतलब था कि ये शेर सिंह का कातिल था। और शेर सिंह के पीछे उसका बेटा था प्रताप सिंह, और जिसके साथ अजीत सिंह, लेना सिंह सिंधावालिया था, जो इसका कातिल था। तो ऐसे, when I realized that, and I'd broken the code, that the groupings were all according to their political affiliations with each other and in the court. And the centerpiece was not Sher Singh, as everybody assumed, scholars up to then had done. The centerpiece was Gulab Singh, because by that stage he was the Maharajah of Jammu and Kashmir. He had bought Kashmir from the Sikh Darbar, from money that he had taken out of the 75 लाख रुपए जी ले गया था। So in fact 2 करोड़ का था। 2 करोड़? हाँ, ठीक। असल रकम जो पूरी रकम थी 2 करोड़ की थी। हुआ ये कि 75 लाख नकद था, और वो पैसा इसने तोशाखाना से चोरी किया हुआ था। राइट, ठीक। सिख तोशाखाना लाहौर किले से, जो 1.25 करोड़ जो था, it was on land between the Satluj and the Beas that he didn't need. So then he surrendered that land to the East India Company in exchange. तो 2 करोड़ को ऐसे इसने 2 हिस्सों में settle कर दिया था. So it wasn't 75 lakhs alone, the total fee was that. So in this painting, then Schoefft realized that now the most famous person in the Punjab who's emerged, all the others are dead, is Gulab Singh. और उसको फूक देने के लिए, he then showed him offering a nazar to Maharaja Ranjit Singh. कि जी, in a sense कि मैं बराबर हूँ आपके, मैं भी महाराजा, आप भी महाराजा. So the purpose of this, जैसे आपने फरमाया, the purpose was to show the politics of the Sikh Darbar on one canvas. So यही view जो Queen Victoria की बड़ी famous painting of her entire family, and उसके अंदर कुछ
people are not standing next to each other and some people are facing the other way. Is that reflective of the same way the Lahore Darbar was structured? Was there political infighting within the groups? There was infighting, but it was not such that negated the unity of the Darbar. I see. ठीक है जी, ये आपस में जो भी करते थे, मगर ऊपर on the surface they were not able to create major ripples. In Queen Victoria's case, don't forget that they came from different countries. So the artist at that time, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, a man called Tuxon, he then showed this, but he couldn't make it too obvious. Right. So he made the groupings in such a way that they were discreetly So the famous painting, Court of Lahore. Yeah. मेरी एक पाकिस्तानी दोस्त है. She is a very famous art critic. I'm not going to name her. Why not? So देखिए, we're not supposed to name women. Anyways, उन्होंने मुझे कहा था जी, the Court of Lahore is the visual obituary of Sikh sovereignty. It's a cruel joke on the last horror of Punjab, and पूछते हैं कि क्या ये Sikh nation का मजाक उड़ाया गया? Because by that time, Sikh empire had pretty much been done in Punjab. What do you say to that? I wouldn't say it's a joke on the Sikh empire, or that in a way it's a criticism of it. Schoefft, at two levels. Let's take it at the political level. Sure. Schoefft was displaying the last of the dynasties of India. Right. Okay. The Hyderabad did not have the same, they didn't display their wealth in the same way. The Mughals had already lost it. Nizam Sahab, Nizam of Hyderabad जो थे, उनको में एक बहुत कमीने थे जो हाँ आखिर में हाँ जब उनके पास अनगिनत दौलत आई तो उनका मशहूर है कि उनकी स्टॉक टेकिंग ऐसे होती थी कि तमाम जो जेवर था उनका राइट हीरे जवाहरात वगैरह वो ट्रेज में होते थे और ट्रेज को वो फिर अलमारियों में रखते थे और साफ नहीं करवाते थे। ओह वाओ। अच्छा, तो जाहिर है मिट्टी जम जाती थी उन पर, तो उनका स्टॉक कंट्रोल ये था कि अगर कहीं वो मिट्टी छेड़ी गई है तो उसका मतलब है किसी ने चोरी की है। Oh my God, oh my God. That was the way he maintained control over it. Now, in the case of the Sikhs, they had that Tosha Khana और हमारे बुजुर्ग जो थे फकीर इमामुद्दीन साहब, वो इंचार्ज थे और हिसाब भी रखते थे। And it was the Kohinoor, just to mention, कोहिनूर जब दिखाया जाता था और नुमाइश के तौर पर महाराजा रणजीत सिंह ने मंगवाया, जाहिर है फरंगी जो आते थे वो कहते कि जी हमने कोहिनूर देखना है वगैरह, तो अगर उन्होंने बाजू पर नहीं बांधा हुआ था तो उसको मिस्ट्री बेली राम को कहते थे कि ले आओ वो दिखाओ इनको। मिस्ट्री बेली राम जब दिखाता था तो कोहिनूर 3 नगों का था और उनकी जो रस्सी थी वो ऐसे अंदर रख के और मुट्ठी में पकड़ लेता था, so that nobody could remove it from his hand. सब देखने की हाथ नहीं लगाना। So this is his technique of doing it. Now, so when, as far as Schoefft was concerned, the political, I don't think the circumstances were such that the Sikh Darbar had been famous by then, right, for its wealth, for its splendor, for its exotic nature, exotic nature. And the second was that it had already been conquered. By 1849. So there was an element of hubris that Schoefft, don't forget, was Austro-Hungarian. He wasn't British. Right. So it wasn't as if the British were using this as an advertisement of their supremacy. Right. He was Austro-Hungarian. Right. And he then, in a sense, used this as an example of a lost empire. It was rather like doing paintings of the Aztecs or something, who, the gold of the Aztecs, which had been looted. Right. He was trying to show that this was what the high water mark of the Sikh Darbar was. The second is at an individual level, Schoefft was a very competent painter. Right. And he could, his forte were clothes, jewelry, brocades, etc. No wonder he's got such colors flashing in. Exactly. Right. So that was what he was focusing on. All right. So at the second level, you have to take his technique
as part of the impression that was being created with that painting. Yeah. So coming to impressions, there are certain forgotten impressions. एक मुझे याद आती हैं जी Rani Jind Kaur. Of course. I would call her the forgotten empress. Okay, well, she was called the unquiet spirit. Unquiet spirit. Unquiet spirit. Why would you say that? Why the unquiet spirit? Lawrence. Sir John Henry Lawrence did this. Henry Lawrence यहाँ resident थे और ये अनारकली के मकबरे के करीब जो इस वक्त सेक्रेटेरिएट है वहाँ थे उस and he was the resident. और resident इस लिहाज से जैसे बाकी कि वो कोई चीज़ वहाँ कोई फैसले नहीं हो सकते उनकी इजाज़त के बगैर. So they had residence in Hyderabad, they had residence in all of the states as such, जहाँ उनके treaties थे. So as the resident, he was responsible, and Faqir Nuruddin साहब मेरे जो बुजुर्ग थे उनका काफ़ी अंदरूफ थी because he was a member of the Regency Council looking after Duleep Singh. मगर महारानी जिंदा को गुस्सा इस बात का था कि मैं महारानी हूँ और मुझे इन्होंने वजीफे पर बांधा हुआ लगाया हुआ है तो मेरा तो खर्चा ही नहीं पूरा हो रहा because up that time, particularly during the minority of her son between 1842, 41 when he came to the throne, 41, 43 to 1846. So she had complete control. And she had this young boy and she could control him and she had access to all the finances, etc. And then suddenly she found कि एक तो उनको वजीफा दिया गया है और दूसरा कि जो खाना आ रहा था वो भी उसके मतलब का नहीं था तो she refused to eat for example for 2-3 days कि नहीं मैं जो भी आप मुझे दे रहे हैं ये नहीं है कि मुझे ज़हर दे देंगे ये था कि आप फिर उन्होंने एक लॉरेंस को कहा पैगाम भेजा कि ऐसे करो मैं तो अब कुंवारी हूँ बेवा हूँ और तुम मेरे साथ शादी कर लो तो हम फिर दोनों पंजाब पे राज कर सकेंगे राइट बेटा मेरा तो महाराजा है तो लिहाजा will so I mean to that extent not that she probably meant it but she did that was her approach जब एक महाराजा तेज सिंह को उन्होंने राजा सियालकोट बनाना था तो दिलीप सिंह को कहा गया कि तुम तिलक लगाओ इसके माथे पर as a sign that he is now a raja. Right. He refused. इसके माँ के कहने पर उसने इनकार कर दिया. लॉरेंस को बड़ा गुस्सा चढ़ा इस बात का तो उसने कहा जी इसको हटाओ इनको फिर शेखुपुरा के ले ले गए वहाँ रही मगर वहाँ से भी वो सियासत कर रही थी पैगाम भेज रही थी वगैरह तो फिर उनको उठाकर that's why he used this expression the unquiet spirit in शेखुपुरा तो ये फिर वहाँ से इनको भेजा गया पहले और फिर She led a rebellion from exile. She was forced into exile. But she still led a rebellion. I mean, exile mein hote hue bhi, she was able to, or is that too much credit to her? A rebellion implies that she had troops at her command. Okay. And she did that, which is what precipitated the First Sikh War. She did that in 1846 and lost. And there's this famous story of her in the Darbar, and the Sardars come to her, and she's sitting behind a screen, and they say, "Kiji, पैसा खत्म you know हमारे पास पैसा भी नहीं है अनाज भी नहीं है घोड़ों के लिए भी नहीं है और हथियार भी नहीं है तो कुछ करें so then there's a rustle of silk and she throws her घघरी over the screen and she said ए तुसी पाओ ते अपने हथियार मैनू सुटो क्योंकि ज़ाहिर है मैनू ही लड़ना पड़ेगा so that is one of the apocryphal stories about her so they went out और शिकस्त हो गई मार खा गए वापस आ गए. So, to that extent, one would say that yes, there was a rebellion. But when you say a rebellion against whom, she was the English. Well, the English were not. The East India Company was in place, and the 1846 they had not. The Darbar was still in place. The Darbar was still in place. Oh yeah, until 1849, it was formally disbanded in 1849. So you can't say that she rebelled against the British because she was already the Maharani. So who was she rebelling against? So, do you consider her to be a tragic figure? Were other princely states or other Rajas in the area afraid of her? Well, they weren't afraid of her. Of course, she fled to Chennai. She was taken to by Faqir Kamruddin, who was my ancestor's younger brother. He accompanied her because he was a young boy. And it was rather interesting, I'll mention this to you, that when I was researching in the archives in the Anarkali's tomb many years ago,
तो वहाँ मुझे उनके जो एनसाइन कॉक्स जिनको जिम्मेदारी दी गई कि इसको महारानी आपने हर रोज़ एक रिपोर्ट भेजनी है कि आज का एक्टिविटीज ऑफ द डे कि अब यहाँ से शुरू हुए, इतने मील ने हमने सफ़र किया, हमने कैंप यहाँ का किया वगैरह। उन्होंने फिर अपनी रिपोर्ट में बाकायदा लिखा कि शाम को फ़कीर कमरुद्दीन साहब जो 18 साल के थे, उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप अंदर जाएं और कंफर्म करें कि महारानी जिंदा वाकई अंदर हैं ओके खैमे में। सो दैट वाज हिज जॉब एंड ही, और उसके एनसाइन के रिपोर्ट में था, एनसाइन कॉक्स के, कि वो उसको महारानी जिंदा इनको प्यार से धोलू कहती थी। धोलू। Now many years later I was speaking to my aunt, great aunt, मेरे दादी खाला थे समझे, and she was the granddaughter of Faqir Kamruddin. So when I narrated to her, मैंने कहा जी वो उनके साथ उन्होंने फ़कीर कमरुद्दीन साहब ने रानी जिंदा के साथ सफ़र किया। She said हाँ उन्होंने प्यार नाल दोलू कहंदे सन। And he had told the grandchildren, and she mentions to me कि फ़कीर मुग़ीज़ुद्दीन और ये, she said ਅਸੀਂ छोटे होंदे सां ते उन्होंने ने की करना सर्दियां दे दिन एक बगल विच मैं ते एक बगल विच मुग़ीज़ ते सानू ओ चोगा ओढ़ के ते फिर कहानियां सुनांदे सन कि सफ़र किस तरह होया वगैरह वगैरह। सर रानी जिंदा के बारे में मेरी एक फेमिनिस्ट दोस्त है, वो कहती हैं जी कि रानी जिंदा was a feminist before there was feminism in the world. She was a woman. Why must you classify it as a feminist? Because being a feminist makes her too dangerous for the history books and our textbooks. Why has she been erased from history this way. I would regard a feminist as a person, Gloria Steinem, right, people like this, modern feminists, Betty Friedman, I think her name, Friedman, as feminists because they were for a cause. Right. And when I say cause, it was for something outside themselves. It was not like Madonna or like, the Kardashians, etc. Right. They were for a cause, right. Women's Lib, Angela Davis, etc. They were for a cause. Now, that I understand as an application of feminism. Right. I wouldn't apply that same term to her because she didn't do it for any other woman. Of course, she did it for her own power and glory. For her own individual power. Right. And even if there was a threat to her power, she eliminated them. So I wouldn't regard that as an application of feminism. Let's not go into dangerous territory, sir. Two men sitting and talking about feminism is very, very dangerous. So let's move to Duleep Singh. Okay. The Black Prince. Yep. Is that a name that Duleep Singh accepted? No, he would have been horrified to have been called the Black Prince. He wasn't called But he was called that. No, not in his lifetime. So the British use that term in their media. They use that term in the newspapers. He was considered to be an exotic newspapers. Prince. That's a different thing. True. I don't think he would have liked being called the Black Prince. Of course. Because he saw himself as quasi-British, right. And almost quasi-English. He became an English squire. He bought this magnificent house, which I visited, Elverton Hall in Norfolk, and it bankrupted him as such. It was said that the staircase, the tread, a single tread in marble, cost him £5 in those days. Oh, wow. And now I talk about the 1870s. And he said, his son then recalled that he was so angry that he didn't speak for 3 days to either the family or to anyone else. इतना गुस्सा चढ़ा था उनको कि इतना पैसा मुझे खर्च करना पड़ा। वहाँ उसने जब आप उसके अंदर जाएं तो पूरा एक शीश महल का माहौल है। उसने पूरी he went overboard and of course paid for it because he went bankrupt. So he kept asking the East India Company for the British government for loans. He wouldn't have regarded himself as and don't forget, as a Black Prince because he still regarded himself as the ex-Maharaja. So his status was different because in the royal family... I'll ask you a different question. Yeah, of course. Was he a willing participant or a victim of the British Empire?
when he was old enough, he became a willing participant because he had been adopted, inverted commas, by Queen Victoria, adopted by her, and because he had the most beautiful eyes and she was enamored of them, and also this exotic thing of a Sikh who had been converted to Christianity, and she saw him as an example for the other princes who should also convert. And she was very keen that he should marry this Bengali, not Bengali, but this lady called Princess Gurama of Coorg, and who was also converted to Christianity and was called Victoria Gurama. So she was very keen कि इन दोनों की शादी हो जाए, मगर नहीं हो सकी. So उनका Buck House में उनका एक marble का bust पड़ा हुआ है. Well, it's not in Buckingham, it's in the Isle of Wight in Osborne House. Oh, sorry. Is that a representation of how the British want the princes to behave? Silent, polished? No. Yes, I take your point. I mean, it's a post facto assessment of it. But at the time, Queen Victoria was, marble statuary was part of the Roman tradition, that people to the Greek tradition. And so Queen Victoria, even to the extent कि उनके जब बच्चे पैदा होते थे ना, तो उनके हाथ पाँव वगैरह उनके मुजस्मे बनते थे संगमरमर में. तो उस लिहाज से जो भी उनको मिलता था, उनके एक या तस्वीर भी बन जाती थी, और उनका एक जॉन ब्राउन के मुख्तलिफ थे ऐसे, जो कि फिर जब उनका इंतकाल हुआ क्वीन विक्टोरिया का, तो एडवर्ड VII उनका जो बेटा था, उसने फिर बकिंघम पैलेस में, विंडसर कास्ट में, जहाँ भी जॉन ब्राउन के ये मुजस्मे थे, उसने तोड़ दिए. Just got rid of them. So it wasn't that that's how they saw the princes. It was just a fashion in those days to do it, to have statues and likenesses, busts made. That's a very odd representation, silent and, solid. How does the statue speak? True. So उनके बारे में आखिरी सवाल, वापस क्यों नहीं आए? वो अगर लाहौर आके reclaim करते कुछ? Yes, that's a very interesting question that you ask. एक वजह थी इसकी. ऐसी जब 1861 में आए थे, इन्होंने आए थे शिकार करन. इन्हें दी वालदा जेड़े सन रानी जिंदा, वो चुनार तो नस के and disguised as a washerwoman, और जेड़ी ते उधर चली गई नेपाल. अच्छा, जब जेड़े पैरादार सन, उन्होंने पूछा गया कि जी तुसी रोकिया क्यों नहीं उन्होंने? उन्होंने कहा सानू की पता, एक नौकरानी आई है, नौकरानी गई. So she had changed, swapped her clothes with them and disappeared to left her jewels. Right. The British then sequestered her jewels, and ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ 11 ਸਾਲ मेरा ख्याल नेपाल ਵਿੱਚ ਰਹੀ है, ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ. ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ. ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮਿਲ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੇਵਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰੀ ਕਿ ਯੂ ਮਸਟ ਨਾਟ ਇਨਵੋਲਵ ਯੋਰਸੈਲਫ ਇਨ ਐਨੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ. ਔਰ ਜੈਸੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਤੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਿਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਖਬਰ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਤਜਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ. ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਰ ਗਏ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਵਲਾਇਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ. She lived there for 2 years in Kensington, and ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ interestingly ਲਿਬਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਘੱਗਰੀ ਪਾ ਲਈ, crinoline and bonnet, ਤੇ bonnet ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਪੱਟਾ and ਆਪਣਾ ਜ਼ੇਵਰ. So this is how she... Quite a sight. Quite a sight. But she turned quite old by then. 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ. ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਸੇ ਹਾਵੀ ਹੋਈ ਪੁੱਤਰ 'ਤੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਸ਼ੀ ਫੈਡ ਹਿਮ ਦਿਸ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਖੋ ਗਏ ਨੇ. So he then had this idea कि मैं तो महाराजा आएगा, right, and I've been cheated, right. So then he left alone, and he goes to with his wife. He goes to Aden. The British remove him at Aden, and the wife and the children are Bamba, and the children are brought back.
he then tries to interest the Tsar of Russia to support him, Right. to rather like Shah Shuja, कि जी मेरी मदद करो तो मैं पंजाब वापस जाना चाहना, and I can deliver not only the Punjab but the whole of India to you. Right. वो कहाँ के गया Caesar Alexander III, उन्होंने कहा बड़ी मेहरबानी, but I'm fine here. Actually, the great game was not really gaming that At day. all. So then meanwhile his wife had died, the property was sold, Elverton Hall, and then he moved to Paris, married again, and died there. So her success, I think, was फिर मैं जब फिल्म बनी है ना on the Black Prince, जिसका जिक्र तुसी भी कीता सी, Shabana Azmi played the role of Rani Jinda. तो मैं फिर उन्होंने लिखा, मैं कहा जी तुसी मैं दाद देना चाहना क्योंकि you portrayed her in such a clever way. She said मैंने तो पंजाबी नहीं पंजाबी आती नहीं है, तो वो मुझे lines सीखनी पड़ी. मगर मैंने कहा आपकी खूबी ये थी कि you know the subtlety with which Rani Jinda converted her son back to Sikhism. Right. वो आपने उस फिल्म में you know जाहिर कर दी. And I said that really was her achievement. So it was. It's a great film. So मेरे एक सिख दोस्त है, उन्होंने कहा था जी कि Duleep Singh wasn't just stolen from his throne; his identity was rebranded for the British monarchy. Is that true? Rebranded in the sense that he became the good Indian, or he became the Christian Indian. Don't forget that was very important. The Queen was the head of the Church of England, and you know, for her, the idea of conversion, I mean, that was what the pattern of the original missionary, the purpose of the original missionaries had been in India. Glory God in gold. Well, yeah, it was a wonderful coup for them to have, as I said, the Maharajah of a kingdom larger than the United Kingdom was now a Christian convert. And so through him, then there could be the expectation that had he remained there, there would have been, you know, further conversions. And the same thing applied whenever they tried to convert. But of course, none of the other states, you don't have Christian monarchs in any of the other states and he became a Christian only after he had been deposed, after he'd been removed. So from that point of view, you know, it was a personal ambition of Queen Victoria's to make him an object of, how can I put it, an acquisition, rather like her paintings and everything else. Here was a living embodiment of her power. What was their relationship like? I mean, unka aapas mein kya? Well, he was, of course, only about 16 when he was brought there. Right. And now we're talking about 1860, 1854, 55. She was in her late 30s. She'd married. She'd got about 6 children by then. Right. So she was very maternalistic towards him, maternal, and treated him as a member of the royal family. He used to play with the princes, etc., and at par. Right. At par. But she used to enjoy seeing him dress up as the Maharajah and apna zevar wagara pehen kar, and then at various functions, Buckingham Palace functions, wo dikhati thi, and as a kind of living doll. Yeah. So let's revert back to Ranjit Singh Sahab and our topic is Ranjit Singh Sahab and Pakistan ki apni memory. Why has Pakistan forgotten him? Because we don't have enough Sikhs to remember him. Don't forget, हमारे कितने हैं यहाँ? 1%, less than 1%. Less than 1%. You've got 300,000 Sikhs, and they're primarily in the northern areas, not so much here, except for the custodians of the. It's ironical that all of the major, I'd say most of the major, except for the Harmandir Sahib, etc., most of the major religious shrines and sites are in Pakistan. And not in India. Nankana Sahib, Maharaja Ranjit Singh Samadhi here, Panja Sahib, etc. All of them are on this side of the border. And Kartarpur, okay, and this is, by the way, Kartarpur is the original site of Kartarpur. Oh, okay. इसी वजह से इसकी इतनी अहमियत है सिख बरादरान में, क्योंकि वो
जब गुरु नानक जी ने ज़मीन ली थी तो वो इस एरिया में ली थी जो इस वक्त करतारपुर है, और जब इंतकाल हुआ वो यहीं हुआ। अच्छा, that's the place where he died. Where he died. I see. और जब उसके बाद जो पहला गुरु ग्रंथ जी कायम हुआ, जब उन्होंने रखा तो वो करतारपुर में रखा गया। अच्छा, about 100 years later, more, 100 years ago, even further, let me say about 200 years ago, रावी का रुख बदल गया। Okay. I think रावी का, या तो पानी इस तरफ आ गया था, करतारपुर की तरफ, सतलज का पानी इस तरफ आ गया, और उन्होंने कहा कि जी ये तो बिल्डिंग डूब जाएगी, और हिफाजत के लिए गुरु ग्रंथ जी को लेकर और दरिया के दूसरे पार ले गए और कोई 22 मील दूर ले गए, so that it would be safe. So the present Kartarpur, Indian trial, is not the original one. It just happens to be the place where the first Guru Granth Ji is stored. The actual one, the site of Guru Nanak Ji's residence for the last years of his life, is on our side, which is why they come over and why it's important to them. So instead of limiting him to Sikh identity, क्या आज का पाकिस्तानी या आज का पंजाबी claim कर सकता है जी कि Ranjit Singh was a Punjabi instead of giving him Sikh identity? Of course. We don't give Aurangzeb a Muslim identity. We don't give, Nadir Shah or any one of them. When I talk about them, I'm talking about all of the rulers who either passed through here or lived here, or we don't give them. We don't say that Jahangir was half Pakistan, half Muslim and half Hindu. Right. He was. He was half Muslim and half Hindu. He was just a man. He was an emperor. And but his mother was Hindu and his father was Muslim. Yeah, but why do we have to then quantify and regard Ranjit Singh as being a Sikh per se, rather than being a Punjabi nationalist? Do you see him as a Punjabi nationalist? Oh, completely, completely. Because never before and never afterwards has Punjab emerged as a nation state. Think about it. I mean, it was a thoroughfare for invaders who came from the north and went on to Delhi and back again with their loot. But it was never an independent state, nation state. देखिए ये तो एहसान है उनका कि जो उन्होंने ट्रीटी की थी अंग्रेजों से, उसके बाद 30 साल तक पंजाब में अमन रहा था, बिल्कुल अमन रहा था. Art was flourishing, people were flourishing. वहाँ से कोई अटैक नहीं हो रहा था, यहाँ से कोई अटैक नहीं हो रहा था, and the shield was Ranjit Singh. Absolutely. So मेरे कुछ पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं मार्क्सिस्ट टाइप के, उन्होंने मुझे कहा था जी कि Ranjit Singh belongs more to the soil of Pakistan than many who now define our nationalism, but we refuse to own him. Is that the final tragedy that could happen to Ranjit Singh, sir? Somebody once said that you don't die, you're not dead when you die. You're dead when you're forgotten. And so let me extend that analogy here. Ranjit Singh is not, in my mind and in the minds of many, many people who have studied history and who appreciate and can distinguish and appreciate the roles of different persons leaders in history, they would recognize that his name lives on. And I'll just conclude with this. Many years ago, when it was the 200th anniversary of his coronation, which was done in New Delhi, the celebrations were in New Delhi, I was asked to speak. Mr. Badshah was there, Manmohan Singh was there, Khushwant Singh, etc. So it was a fairly high-level gathering. And I began with this reference, ke Jine Lahore nahi vekhya, wo Jamia nahi. And Badshah Sahab, who at that time was the Prime Minister, asks Manmohan Singh, who was the leader of the opposition, ke ye kya keh rahe hain? तो उन्होंने कहा कि ये फरमा रहे हैं कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा नहीं हुआ. So when it was his turn, Badshah Sahab came up and he said, जैसे फकीर साहब ने अभी अर्ज किया है, जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा नहीं हुआ. तो मैं तो लाहौर हो आया हूँ, तो लिहाजा मैं जिंदा हूँ, was his way of putting it. Now, towards the end of it, it was very charming and it was very generous of him to make that reference.
बाद में जब मैंने कंक्लूजन की मैंने कहा जी मैं शुरू कीता सी वैसे ही जिन्हें लाहौर नहीं वेख्यो जमया नहीं जिन्हें लाहौर ते राज कीता वो मरिया नहीं वो आज तक भी महाराजा रणजीत सिंह अमर ने and the whole audience sort of erupted in praise. Now the reason I'm saying this to you is Bishan Singh Bedi, whom I met at a function somewhere in New Delhi, he said to me many years later, he said जी वो एक ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇੰਸ was me I was suddenly wasted and ignored. But coming back more seriously, Maharaja Ranjit Singh is a part of history. Whether he's acknowledged by us today as a part of that history is immaterial. There will be people who will recognize his role. There are people, have done before. There will be people who will recognize that. Because that is the nature of history and that is the nature of its reality. You can't ignore it. You can't. So coming to the realities of history, एक आखिरी सवाल पूछता है. सर कुछ उन पे इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं कश्मीर में लूट मार का, मुल्तान में लूट मार का, मुसलमानों पे जुल्म, कुछ ऐसे हिस्टोरियंस की रिपोर्ट्स आती हैं जी के बादशाह मस्जिद में घोड़े बांधे गए. क्या रियलिटी इन चीज़ों की? घोड़ों को ऊपर ले जाना बड़ा मुश्किल है पहाड़ी सीढ़ियों पर. वहाँ बारूद खाना ज़रूर था because it was secure, it had only one entrance and therefore एक लिहाज से उनको he did and he was partial. I mean he did implement things. For example, the killing of slaughter of beef, etc. was prohibited. Things like that. But I don't think we come back to that earlier point that you mentioned, about minorities. Were the Muslims persecuted? I don't think so. Not as a national policy, not as a state. So, but let me just conclude with a remark of there was a Sikh Guru. I still remember he was from the Guru Nanak Ji University. Dr. Preetham Singh, बहुत करीबी दोस्त थे और ये मैं बात कर रहा हूँ 1974 की. लाहौर आते थे और ये पहला जत्था आया यहाँ लाहौर post 1971. So मुझे उन्होंने उनको रहा किया. समाधि को 300 आए हुए थे तो उनको वहीं उन्होंने अंदर रखा हुआ था. तो फिर बड़ी मुश्किलों से उनको इजाज़त मिली कि जी आपके लिए बाहर आ जाएं और बादशाह मस्जिद वगैरह उधर से फिर लें. So I was taking him around and he said to me, Faqir Sahab, in looking at the Badshah Masjid, he said, बादशाही मस्जिद के नक्शो निगार विच कोई फर्क आया उन्होंने ज़मानियां तो दे बाद मैं कहा नहीं सरदार साहब सिर्फ इस्तेमाल विच. So he said you बड़े पते दा जवाब तुसी दिता है and that's the truth of it. I feel that. But then today when you think about it, what are we doing with churches? Not much. We just left them to. And with our minority communities. So I don't think we should gloat over this. What is much more important is that there is a legacy that has been left, a high watermark. I remember one of the ministers in an interim cabinet saying to me, in fact, it was Babar Ali Sahab when he was the Minister of Finance during Muin Qureshi's time. So उन्होंने पूछा कि, did I achieve anything? And I said, look, you were there for only 3 months. But what was important was not to achieve what you did, but you showed how it should be done, how governance should be conducted. That is the achievement. And in this case, Maharaja Ranjit Singh should be admired for demonstrating how governance should be done. Inclusive, just, and open. And open, and accountable. And when you think about it, his accountability was not by sentencing people to death. You could count the number of people who had been killed on your hand. No. It was by example and also by, I would say, not even by threat. It was by moral force. Moral force. Moral force. Listen, in the hope of that moral force, dekhte hamare pe kab aati. Thank you so much, sir. Not very kind of you. My pleasure. Very kind of you, sir. Thank you.